Hello student, welcome to DSS online class. I am your English teacher Santosh sir and today I present with the new video of An Alien Hand, chapter 2nd, Bringing with Kari. Dear student, I have finished here and today I start from here. Okay student, now start the lesson. I looked all over but I could not find him. Here, the narrator and keeper said that he looked all over but he could not find him. नरेटर कहते हैं कि वो चारों तरफ देखे लेकिन उस बेबी एलिफेंट को नहीं देख पाए. I went near the edge of water and I saw a black something struggling above the surface. Then the narrator went near the edge of water and he saw that a black something struggling above the surface of water. जैसे ही वो पानी के पास गए उन्होंने देखा कि कोई ब्लैक कलर की चीज़ पानी के सरफेस पे स्ट्रगल कर रही है बाहर निकलने के लिए. Then it rose higher and I was trunk. It was the trunk of my elephant, and then that elephant rose higher, and after that the narrator understand that it was the trunk of my elephant. उसके बाद जैसे ही वो सूंड को ऊपर देखे वह तुरंत समझ गए कि यह मेरी एलिफेंट है. I thought he was drawing, and at first the writer thought that his baby elephant drawing in the water. जो नरेटर थे वह सोचे कि उनका जो एलिफेंट है वह डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. And the narrator was helpless because he could not save his baby elephant because he was 400 pounds and he was also very higher than him. वह जो नरेटर थे वह हेल्पलेस थे क्योंकि वह जो है इस इतने भारी भरकम हाथी को जो है बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वह 400 पाउंड्स का था और लंबाई में भी जो है वह काफ़ी ऊंचा था. बट आई सा हिम हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड मोमेंट ही कॉट माई आइज एंड बट द सेम टाइम ही सा दैट हिज बैक rise above the water, and at that moment the narrator caught in his eyes. और जैसे ही वह हाथी थोड़ा सा ऊपर आया नरेटर जो है तुरंत आँखों से देख लिए. He began to trumpet and struggle up to the shore, and he began to trumpet and struggle up to the shore. वह जो है चिल्ला रहा था और बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम एंड आफ्टर दैट द एलिफेंट पुश्ड द नरेटर इनटू द वाटर एंड आफ्टर दैट द नरेटर ऑल्सो फेल इनटू द स्ट्रीम. जैसे ही वो किनारे गए वह उनका जो बेबी एलिफेंट था उनको जो है पानी में पुश कर दिया, धक्का दे दिया. एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, जो नरेटर थे वह स्ट्रीम में धार में चले गए. जो वाटर करंट होता है उसको स्ट्रीम कहते हैं. आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट on the bottom of the river, and narrator saw that a boy lying flat on the bottom of the river.
और जैसे ही अंदर पानी में गए उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वह नदी के बॉटम वाले हिस्से में पड़ा हुआ है. He had not altogether touched bottom but was something about afloat, and that boy was not in the bottom. He was something above from the bottom. I came to the surface of water to take my breath, and there Kari was standing. And at that same time, I came to the surface of water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. And at the same time, the baby elephant helped the narrator to help the narrator. उसी समय जो है जो बेबी एलिफेंट था वहाँ पे खड़ा था और वह नरेटर के हेल्प के लिए वेट कर रहा था. आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्राइंग बॉय टू द सरफेस, but not being a good swimmer. And at the same time, the narrator dived down again and pulled the body of the drawing boy in the surface of water. But the narrator was not a good swimmer. वह जो नरेटर थे वह डाइव लगाते हुए छलांग लगाते हुए उस डूबते हुए बच्चे को बाहर निकाले और सरफेस पर लाए, लेकिन जो नरेटर थे वे अच्छे स्विमर नहीं थे, अच्छे तैराक नहीं थे. आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. एंड द नरेटर कुड नॉट स्विम ashore and the slow current was already dragging me down, and at the same time the current was slow and it was dragging the narrator in the down. और उस समय जो करंट था, वाटर करंट था, वह थोड़ा स्लो तो था लेकिन उसके बावजूद वह जो करंट था वह नीचे की तरफ खींच रहा था नरेटर को. Seeing as drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, and after seeing Kari, and it was helpless, the Kari was helpless, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out of his trunk again. And after that, I saw that the baby elephant stretch his trunk and he wanted to help the narrator. I rushed up my hand to catch it, and I also raised my hand to catch the trunk of the baby elephant, and it was slipped, and I found that it was slip. I found myself going under the water again, and after that the narrator found that he was again going under the water, but this time I found that the water was not very deep, and at the same time the narrator found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and
my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow. And after that, the narrator sank to the bottom of the river and he doubled his feet under the water and kicked the river bed so that he upward like an arrow. जैसे ही जो नरेटर थे अपने पैर को मोड़े और नीचे से जो है वह तेजी से वह हिट किए एरो के तरह और अपने शरीर को पानी के ऊपर ला दिए. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, and the narrator said that in spite of this, he also holding the drowning boy with his hand. राइटर जो थे उस डूबते हुए बच्चे को अपने हाथ में पकड़े हुए थे. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. And when the narrator rose his body, he felt that something was marked in his around his neck. जैसे ही नरेटर जो है ऊपर आए पानी के बाहर, उन्होंने महसूस किया कि उनके गले के चारों तरफ कुछ लगा हुआ है. दिस फ्राइटेंड मी, एंड आफ्टर seeing this, the narrator frightened very much. I thought some water animal was going to swallow me, and the narrator thought that some water animal was going to swallow him. नरेटर ने सोचा कि कोई वाटर एनिमल जो है उनको निगलने जा रहा था. I heard Kari squealing, and I knew it was the trunk about my neck. And after hearing the squealing of Kari, I knew that it was the mark of the Kari's trunk that was around my neck. उसके बाद करी जो है चिल्लाया और तब मैं समझ गया कि यह जो निशान थे वह करी के ट्रंक के निशान थे. He pulled us both ashore, and he pulled out both of us from the water. वो उसी ने जो है हम दोनों को, यानी जो वह लड़का था जो पानी में डूब रहा था उसको और नरेटर को, दोनों को वह पानी से बाहर निकाला था. इसी के वजह से उसके जो गर्दन थे उस पे निशान पड़े हुए थे. ओके स्टूडेंट, थैंक्स. आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एक्सप्लेन टूडे, एंड आफ्टर दैट I finish this lesson. Okay, thanks.